Good morning, students. Yesterday, I have explained question answers of chapter 2. I hope you will be done in your classwork copy. Today, I am going to explain keywords of this chapter. You watch this video very carefully, then you note down in your classwork copy. Okay? Yes, now I am starting keywords. Chapter 2, Nutrition in Animals. Topic is keywords. First keyword is absorption. Keywords is absorption. The digested food passes into the blood vessels in the wall of small intestine. This process is called absorption. The digested food passes into the blood vessel in the wall of small intestine. This process is called absorption process. Clear? Now come to next. Amino acids. Amino acids often referred to as the building blocks of protein are compounds that play many critical roles in our body. They are needed for vital processes like the building of proteins. You have already studied in the chapter that amino acids, protein changes into amino acids and fats changes into fatty acids. So, these are the amino acids. Amino acids, often referred to as the building blocks of protein, are compounds that play many critical roles in our body. They are needed for vital processes like the building of proteins. Clear? Now come to next, amoeba. Students, कल मैं आपको कुछ फोटोज़ भेजूंगी जिन्हें आप उनकी फ़ोटो भेज दूंगी डायग्राम के, और उनको आप उन्हें इन्हीं के मैं लिख दूंगी उस पर कि किसको आपको किसके सामने ड्रॉ करना है. ओके, देन यू ड्रॉ दीज डायग्राम्स. नेक्स्ट इज अमीबा. अमीबा is a microscopic single-celled organism found in pond water. It has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. It constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia. Pseudopodia is start from the spelling of pseudopodia start from P, but P is silent. So this word is pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Clear? You have already studied about the amoeba. You know amoeba is a microscopic single cell. जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, इसमें जब मैंने अमीबा एक्सप्लेन किया था तभी आपको बता दिया था अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कि माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा. वी कैन नॉट सी अवर नेकेड आइज. इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. इसकी एक सेल मेम्ब्रेन है. अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है इसमें. एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, इसमें जैसे वाटर बबल होते हैं उस टाइप के वैक्यूल्स होते हैं. इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये वैक्यूल्स, these vacuoles are present in cytoplasm. It constantly changes its shape and position. You know, amoeba constantly changes its shape and position. You know, the amoeba is a irregular shape. It has not a definite shape. Okay, it changes their shape and size always. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अपने pseudopodia का यूज किस लिए करता है?
फॉर मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने के लिए, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और अपना फूड कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर transported by the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. This process is known as assimilation. Clear? I am explaining again. The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. Clear? Now come to next, bile. You have already studied about the bile. Bile is bile juice. It is stored in sac-like structure. It is known as gallbladder. And in which place it comes? It is produced in liver. So bile is a fluid that is made and released by the liver and stored in the gallbladder. Bile helps with digestion. It breaks down fats into fatty acids, which can be taken into the body by the digestive tract. Clear? Bile is a fluid that is made and released by the liver. ये लीवर के थ्रू, लीवर ही इससे निकलता है बाइल जूस, एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन. ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है. इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. ये फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देता है, विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी के में ले लिए जाते हैं. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, बक्कल कैविटी. द पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी, द पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी बाउंडेड बाय द लिप्स, cheeks and gums are called buccal cavity. Clear? Now come to next, canine. Canine, a type of teeth. The canines are situated at the corners of the dental arches. They have a sharp, pointed, biting surface. They have a sharp, pointed, biting surface. Their function is to grip and tear food. There are 4 canine teeth in primary and permanent dentition. You already studied about the teeth. There are 4 canine teeth in our upper and lower jaw. The canine are situated at the corners of the dental arches. जो हमारा डेंटल आर्ची होता है, इसमें हमारे कॉर्नर्स पे आप देखते हैं ना, 4 फ्रंट टीथ होते हैं, और उसके साइड में 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं जो नुकीले दिखते हैं. डॉग में भी आपने देखा होगा कि ये वाले टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. सो दे हैव अ शार्प पॉइंटेड बाइटिंग सरफेस. दियर फंक्शन इन कैनिन टीथ का जो फंक्शन है वो क्या है? इज टू ग्रिप एंड टीयर फूड. अपने फूड को ग्रिप करता है, पकड़ता है, एंड टीयर इट, और उसको फाड़ देता है, हेल्प करता है फाड़ने में. देयर आर 4 कैनिन टीथ इन प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटेशन. हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं. एक बार तो जब छोटे होते हैं, बच्चों के टीथ निकलते हैं, वो टूट जाते हैं उनके प्लेस पे, फिर परमानेंट टीथ आते हैं. जो पहले वाले टीथ होते हैं, दोज आर नोन एज प्राइमरी टीथ, एंड द जब ये टूट के दोबारा आते हैं, दीज आर नोन एज परमानेंट टीथ. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which is digested by the action of certain bacteria. It is digested by only the ruminants because they have a large sac
between the large and small intestine. These bacteria are not present in human, so human cannot digest the cellulose. Clear? Now come to next, digestion. In digestion, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. I have already explained this topic, digestion, that breakdown of complex component of food. फूड की जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं उनको जब सिंपलर सब्सटेंसेज में दे ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन. क्लियर? Egestion is the act or excreting unusable or undigested material from a cell. This process is known as egestion. Egestion is the act of excreting unusable or undigested material from a cell. This is known as egestion. Clear? All of you clear all these keywords? Okay. Thank you, students.